Give you thanks because you have given chance to me. Thank you, sir. Thanks to you all. I'm a national footballer. I'm a Arjun Award. I'm a Asian Football Championship, and as well as I'm the first footballer come as MP to your place. I invited. I really thanks to all my colleagues here, MPs. One thing I tell you, this is the first time, I'm really thanks to you, first time some debate about sports and youth. I don't know, last 20 years, 30 years, I know before, but first time, sometime, our government started youth and sports. This is a very good thinking. I am very much happy. इतना अच्छा लग रहा, हम इतना खुशी है, होना चाहिए. स्पोर्ट्स यूथ स्पोर्ट्स अच्छा होगा तो हमारा कंट्री ऊंचा चलेंगे. स्पोर्ट्स अच्छा होगा तो ऊंचा चलेंगे. जितना इधर ड्रग एडिक्ट हो गए नहीं, कुछ चगली में होगा, फुटबॉल होना गया, स्पोर्ट्स होना चाहिए. तो आई वांट टू से सम स्मॉल अबाउट थिंग्स बिकॉज आई एम द फर्स्ट फुटबॉलर एज ए कम एज ए एमपी आफ्टर 70 years because I am thanks to my AITC, also our Howrah, most probably people. My small demand, sir, I must say that there is a no farm sports policy central government. Number of autonomous bodies under the Ministry of Youth and Affairs and Sports, but lack of coordination between them. I found in budget provision that lots of money is being expended in numbers of program and scheme every year. But what is the net outcome? I don't know. Sir, I got a publication from Ministry of Youth Affairs and Sports with the statistics of the achievements of Khelo India School Games 2018. But is this game is actually well spread throughout the country properly? I mean, will the actual motto to start this type of game actually pluck up the grassroots level? Sir, even the first sports person become a member of parliament third consecutive time. Sorry to say that I have also no firm idea about Khel India scheme, which was launched in 2017. Sir, I feel huge amount of money required for the actual development of youth affairs and sports. We have number of schemes and projects for developments, but what I feel that our main drawback is to lack of coordination between them. In her budget speech, Honorable Finance Minister announced to set up National Sports Education Board for development of sports persons under Khelo India scheme. Very good. But how this National Sports Education Board works and what will their key motto? How this board will functioning? I don't know how this, who will govern this? Is this will be another organization led by the bureaucracy of the actual person from sports? Fraternity will be govern this body. With a vast experience from Greenfield, it is my humble suggestions to you, sir, please allow the person from sports arena to become the policy maker. Sir, unless the participation of the people from the fraternity as policy maker, the sports will not achieve its goal. Infrastructure, stadium, hostel may be built by bureaucrats, but only a coach can make a sportsman best. Sir, I must say that there is no farm sports policy, but one thing I can say, हम एक बात बोलना चाहते हैं आप लोग को, sir, आपका through हमारा minister, very nice minister sitting there, Gigi is there, is a very good friend of me. हम एक बात पूछना चाहते हैं हम, जी हमारा बच्चे लोग, जिसको catch them young, most probably all the disciplines इन लोग का पास, इन लोग को गांव से लेने के लिए किसको भेज रहा? We need sportsmen, ex-sports people are sitting there, they are rowing like anything. हम लोग को कुछ ताकत नहीं, हमको कुछ देना नहीं भाई. Please, sir, you bring them.
No need to any political man, no need to any other bureaucrat. Only sportsmen, they select the voice. बच्चा लोग को बनाएंगे, लोग कॉल करेंगे, आप उसको बाद आप लोग इस लोग को नेशनल प्रॉपर्टी बनाओ, नेशनल प्रॉपर्टी. आप लोग खर्चा करते ज्यादा, प्रॉपर्ली करना चाहिए स्पोर्ट्समैन को. Sir, national, they should be national property, sir. Another thing is there. I am from football, sir. I want to tell something about football. I am from football. Football, you know, those that are belonging in football officials, they are useless. They did nothing. You immediately, sir, you take support. You just tell them immediately, sir, you call all the senior players, senior footballer, Olympian, they should something do. अभी जो हुए हैं, कोई पॉलिटिकल आदमी बैठ जाते हैं, कोई बाहर का आदमी बैठ जाते हैं, जो खेले का बाद खुद जानते हैं नहीं फुटबॉल बर्बाद कर देगा. Because I know, I 33 years of playing for football, I know what is going on. हमारे बच्चे लोग अभी वर्ल्ड कप खेलेंगे, हमारे बच्चे लोग आप थोड़ा सपोर्ट करें. You just bring it from Gujarat, bring it from Bihar, bring it from UP, why Bengal, Kerala, and go all the time. सबसे बच्चे लोग को लाना चाहिए. लाइए. फुटबॉल में क्या हो रहा? हमारा सबसे बड़ा टीम मोहन बगान इज नेशनल टीम ऑफ इंडिया एंड ईस्ट बंगाल एंड मोहबडान. मोहन बगान sometime they beat English peoples 1911. They beat East of football team and they become हमारा वो टाइम का टाइम में जीते थे. तो अभी 3 मोहन बगान ईस्ट बंगाल मोहबडान टीम के लोग बंद करना चाहते हैं, ये लोग खराब करना चाहते हैं. ये होने चाहिए. एक टीम का 1 करोड़ का सपोर्टर है. 1 करोड़ आई टेल ऑल ओवर वर्ल्ड. दिस फुटबॉल इज अ गेम हम लोग का खेला है. हम बोलने चाहते हैं आप ये जो आप बनाए, आपका भी कोई बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी में हाथ नहीं देंगे, जरूर हाथ देना चाहिए. आप लोग को जरूर हाथ देना चाहिए. दिस फुटबॉल मेक इट मेनली दे फिनिश आवर फुटबॉल. प्लीज गॉड से आई रिक्वेस्ट थ्रू योर मिनिस्टर डू समथिंग. आप लोग बोलते हैं प्रसून दा हम नहीं करते कि किसी लिए ऑटोनोमस बॉडी. आई नो गवर्नमेंट ठीक एवरीथिंग कर सकते हैं, यही बोलने के लिए आए. और एक बात है, देयर इज जीजू भाई इज देयर एंड अनदर स्पोर्ट्समैन इज देयर. एक बात है भाई, हम लोग देख रहा छोटा से करीब 30 ईयर्स 40 ईयर्स 47 ईयर्स हम देख रहा, ये बच्चा लोग रोटी और सब्जी खा के वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते. रोटी और सब्जी खा के वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते. खाना दीजिए, करिए कुछ. आप लोग कोशिश कर रहे हैं, और करिए, खाना दीजिए, उसको नेशनल प्रॉपर्टी बनाइए. स्पोर्ट्समैन लोग कुछ मिलते ही नहीं, जब जीत के आते तो करोड़ रुपया देते आप लोग. और जब पहले था जो खाना नहीं मिलते, घर में कुछ फैसिलिटी देते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलते, उसके ऊपर जोर दीजिए. प्लीज गॉड से स्पोर्ट्स, एवरी स्पोर्ट्स काम आप करेंगे, कर रहे भी. फुटबॉल को बचाइए. फुटबॉल है बच्चे लोग इतना अच्छा अंडर 17 खेले. आई थैंक्स टू एवरीबॉडी, थैंक्स टू योर गवर्नमेंट एज वेल एज थैंक्स टू माई चीफ मिनिस्टर. और फाइनल की उधर में कलकत्ता में ममता जी को हम धन्यवाद देने चाहते हैं. तब फुटबॉल को कुछ करिए. आई एम फुटबॉलर. जब इधर आते हैं हमको पूछते साहब भाई आप फुटबॉलर MP बने, आप क्या किए? कुछ कर नहीं रहे. भाई हमको बुलाइए, इसमें कोई पॉलिटिक्स बस रखिए, हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे. हम बुलाइए, कोई जरूरत नहीं, सब मिलकर बुलाइए, कुछ थोड़ा तो सपोर्ट कर सके. आई टेल यू अंडर 17 वर्ल्ड कप जो बच्चे लोग खेले उसको कोई रखे नहीं, उसको पकड़ के नेशनल प्रॉपर्टी बनाना चाहिए थी, ट्रेनिंग देना चाहिए थे. दे आर कमिंग बैक, दे विल गेट. हम बोलते हैं अभी भी, हम बोलते हैं जो इंडिया में फुटबॉल ऑल स्पोर्ट्स है ज्यादा, फुटबॉल अभी भी वर्ल्ड कप खेल सकेंगे. थोड़ा बहुत आप लोग आइए, आप लोग बाहर रखिए, थोड़ा साथ में आइए. और यू इमीडिएटली कॉल ऑल द मोस्ट पब्लिक टॉप प्लेयर्स दो आर जस्ट केरला, गोवा और इंडिया, ऑल ओवर बंगाल द प्लेयर्स, उसको बुलाइए. हम लोग का पास खाली कागज में देखते हैं, हम ओनली पेपर. ये काम किया, वो काम किया, वो काम किया. ऑन द ग्राउंड करने होगा. सब ब्यूरोक्रेट को देने नहीं होगा, सब कुछ ब्यूरोक्रेट करेंगे होगा नहीं. ये चलते नहीं, ये भारत में चलते, सब कुछ ब्यूरोक्रेट करते हैं. और सब को सिलेक्शन भी करते हो लोग, टीम भी चलाते हो लोग. गॉड से आप लोग स्पोर्ट्समैन को बोला, ये बहुत अच्छा अच्छा स्पोर्ट्समैन है. दे आर रियली, दे आर इंटरेस्ट टू कम योर प्लेस. एक दे बुलाइए, गिवन समथिंग. ऑल द अदर स्पोर्ट्स इज अ वेरी नाइस. चलाइए. भारत एक ही जगह जो जिधर में गोल्ड है सीखा, अभी गोल्ड मिला. हम चाहते हैं आप लोग सपोर्ट करिए, साथ में रहिए. गवर्नमेंट सॉरी 1 मिनट सर. गवर्नमेंट क्या करते हैं, आप लोग सबसे पीछे यूथ डेवलपमेंट रखते हैं. वो क्वेश्चन आंसर में सॉलिट्यूड से कभी मिलते नहीं. हम लोग स्पोर्ट्स के ऊपर रखिए, सब कुछ पीछे रखिए. सब दुख का बात है, पर भाई लोग जो इधर में इतना MP हैं, किधर गए? आप तो लोग होना चाहिए इधर. हम लोग क्या बोल रहा, क्या कर रहा, हम लोग मिल के करेंगे.
भारत छोटा जगह है, बहुत बड़ा जगह है भारत। भारत सब कुछ कर सकते। माई रिक्वेस्ट, यू मस्ट रिक्वेस्ट सर, योर मिनिस्टर, प्लीज यू कॉल मी सर। हम AITC MP, हम थोड़ा बहुत बोल सकते, आपको बुलाते नहीं। इसमें कोई तृणमूल और BJP मत लगिए, हम लोग छोड़ दीजिए, भारत के लिए करिए। सचमुच बोल रहा है। I am always time. I am come to you always. Thank you, sir. Last not in the list. I tell one, our greatest footballer. He is telling me he is writing when he sings signature. We give him signature. He just given some slogan. I tell you this one. He writing me, play the football, see the world. Play the football, see the world. Be a gentleman, and you fly your national flag all over the world. Thank you, sir. Namaste.